students, and I hope that your board preparation is going on really well. So आज हम मिल रहे हैं, आज हमारा है session 6, which is actually statement based questions, and we are doing economics specifically. अभी तक हम बहुत सारे सेशन कवर करते आए हैं. This is like we are on the 6th session. So आप लोग सेशन नंबर 1 में देख चुके हैं द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई थी, जो कि अब आने वाले सेशंस में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस नवनीत सर आपके साथ लेने वाले हैं. और उन सेशंस में वो आपको 3 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, ये सब प्रैक्टिस कराने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को उसमें बहुत मजा आएगा. और जितने भी आपके जो न्यू चीजें आप कर रहे हैं वो सारी इसमें एप्लीकेबल होंगी. जो भी आपने सीखा है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के सेशन में, वो सब भी इसमें एप्लीकेबल होगा. ओके, देन हमने लिया था रीजन असर्शन के क्वेश्चन, जहां पे हमने रूल 3 गेम ऑफ रूल सीखा था, एंड उससे हमने क्वेश्चन के आंसर्स निकाले थे. सो डेफिनेटली हमने एक अप्रोच लर्न की थी कि आप कौन सी अप्रोच को यूज कर उनके क्वेश्चंस यानी रीजन असर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. देन व्हाट वी डिड वाज केस स्टडी. केस स्टडीज में हम लोगों ने जाना कि कन्वेंशनल मेथड से कैसे करते हैं, और जब आप यू रनिंग आउट ऑफ टाइम, जब आपके पास कम टाइम है, उस टाइम पर कैसे हम केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कुछ केस स्टडीज तो ऐसी होती है जिसमें हम खाली क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं. नॉट एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड फ्रॉम द केस और कंटेंट दैट वी हैव. ऑलराइट, सो दैट इज इट. देन उसके बाद हम लोगों ने किया था सेशन नंबर 3, जहां पर हमने डायग्राम, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात की थी. उसमें हमने देखा था कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 1 मार्क के भी हो सकते हैं. सेम गोस फॉर ग्राफ्स एंड डेटा. ऑलराइट, देन नवनीत सर ने आपके साथ सेशन लिया था, एंड आई एम रियली श्योर आप लोगों को बहुत मजा आया था उसमें. सो दैट सेशन वाज स्टैंड अलोन क्वेश्चंस. स्टैंड अलोन क्वेश्चंस किए थे हमने, फिल इन द ब्लैंक, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, वो सारे हमने प्रैक्टिस किए थे, जिसमें मोर और सो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए थे. ओके, एंड देन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे मैच द कॉलम क्वेश्चंस. मैच द कॉलम क्वेश्चंस में एक एडेड एडवांटेज आपको ये मिला है हमारी तरफ से कि अगर आपने वो वाला सेशन देखा है, सो वो सेशन आपको खाली सीबीएसई में ही नहीं हेल्प करने वाला, बल्कि सीयूईटी में भी हेल्प करेगा. सो सीयूईटी के पर्पज से भी अगर आपने वो वाला सेशन देख लिया है, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन आप सीयूईटी में या फिर आप सीबीएसई में गलत करके आएंगे ही नहीं. और आज हम हमारे 6th सेशन पे आ चुके हैं, विच इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको एडवांटेज रहेगी कि यू कैन फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन सीयूईटी एज वेल. सो आज का सेशन 2 पर्पस सॉल्व करेगा. आपको सीबीएसई के लिए तो प्रिपेयर करेगा ही, बट साथ साथ आपको सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर कर देगा. ठीक है. सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक होते हैं जिनमें you find 2 statements and you have to identify. So basically it works like reason assertion only. That बस reason assertion नहीं होता, लेकिन statements में you have to identify if statement 1 is true, if statement 2 is true, if both of them are true, or if both of them are false. And then there are also questions 4 statement based, जहाँ पे आपको 4 statements दी होंगी, and you have to identify which of them those are true, correct, incorrect. Okay, depending on the demand of the question, the command word, then we answer those kind of questions. So we will practice both kind of questions today. All right, so let's just move ahead and let's know the rules. So you don't even have to read, I'll just say it for you, that we have a dedicated Telegram group, economics ka, and there we daily post at 2 p.m. we post a daily quiz, and at 9 p.m. we post answers of that daily quiz. And also that group is very active, so students, whosoever has any question, any silliest of the doubt you feel that it's you're hesitant in asking, you can definitely ask on Telegram, and we are very active there. Also, if you're facing any issues, like recently students have been facing issues where they are, even by solving the sample paper, they are not able to get the confidence. So we are here for you. We'll give you that confidence. Don't worry. And we have the dedicated Telegram group for that as well. So if any doubt today remains unanswered, you can definitely ask in the Telegram group, or if you're watching the recording of this session and still you feel that, okay, you missed the live session because of some reason, and now you're watching the recording at your own pace, even then you find that there's something that you need to ask, you can again go to the Telegram group and ask whatever doubt you have. All right, so that is the thing. If you are attending the session live, if you're with me right now, you can use the chat box, you can use YouTube ka chat box, and you can ask your questions or post your queries or answer somebody else's doubts, anything, but respectfully maintain that tech account. Okay, so that's how we roll, and that's how we go about the session. So these are just the rules.
And latest paper pattern, as I always discuss in every session. So we have 1 mark questions. We have 20 questions. Okay, so those the total weightage goes as 20 marks. We have 3 marks wale questions. There are 4 questions, and that weightage counts for 12 marks. And we have 4 marks question. Total number of questions are 6. So 24 and 6 marks question, total number of questions are 4. So it makes it 24 in the weightage. All right. So this is, I think you should have it by heart now. So all of you, whosoever are live right now, I would really be happy. And, it would be a great pleasure for me if you just can drop a hi, hello, or yes, you're here, something of that sort, so that I know you guys are active. So that would be, that would mean a lot. And then we'll just continue with the session. We'll continue with our first question. So these kind of questions, this question has 2 statements. Correct? This question has 2 statements. You can find statement 1, you can find statement 2. Now, the question here arises that, reason assertion भी same था. Difference क्या है दोनों में? Difference ये है, reason assertion में 3 रूल थे, 3 रूल गेम था. First rule हमने देखा था कि कोई भी statement false होते ही गेम खत्म. Correct? यहाँ पर आपका statement 1 पता होना चाहिए, statement 2 पता होना चाहिए. But the thing is, you don't have to, figure out that statement 2 explains correctly statement 1. Like in reason assertion, reason is the correct explanation. You don't have to go that deep. That's the difference between statement questions and reason assertion question. But you need to know if statement 1 is true, if statement. So basically, यहाँ पे ये एक आता है जो catch होता है या क्यों ये questions फिर भी difficult होते हैं, even though there are no 3 rules, because you need to know दोनों statement के बारे में. We'll come to 4 statement questions also, जहाँ पे कोई statement आपको नहीं भी पता तो भी you will be able to answer. लेकिन in questions में ऐसा नहीं possible होता. You need to know about both the statements. All right. So let's just read the question and see how we solve such kind of questions. So you have statement 1. Okay. Your statement 1 says, both India and Pakistan initiated their economic reforms without any external pressure. Okay, if you've read about India, China, Pakistan, या वहाँ पे क्या चल रहा था, जो भी experiences है, comparison है हमारे book में, अगर आपने वो पढ़ा है, so you should know if the statement is true or false. What do you think? Is statement 1 true or false? Anybody in the chat section would want to say true, false? You can write TF. You can write. Anyone? So see the options. If we study, the options are statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is true. Both statements are true, both statements are false. So there's no escaping. There's no elimination technique that you can use in this one. I'm sorry, but I always help you with elimination technique, but here I don't think we have any option. So we have to know both the statements. Anyone, true, false? Okay, so Daksh is saying false, absolutely. Both India and Pakistan initiated their economic reforms without any external pressure. No, it is false. Pura external pressure tha. Correct? So pura BOP losses में जा रहा था, बहुत सारी problems थी जिस वजह से external pressure था, because of which they initiated their economic reforms. Correct? So this statement is false. Then we come to, so if the statement is false also, na, statement 1 is false, even then we know कि हम eliminate भी करने चाहेंगे ना, इसमें elimination technique नहीं लगेगी. You're still left with 2 options and you will have to know about statement 2 also. So there's no point in using elimination technique. Just that we know statement 1 जो है आपका, और यहाँ rules भी नहीं चलते, यहाँ game नहीं खत्म होता, क्योंकि इसके options ऐसे हैं. Correct? So you know the statement is false. Statement 1. What about statement 2? Anybody? So statement 2 is Pakistan has successfully implemented SEZ, Special Economic Zone policy, and reaped its benefit using export promotion policy. पाकिस्तान ने successfully SEZ policy implement की और उसके benefits भी लिए. अगर benefits लिए होते और successfully reap की होती तो उसके सारे sectors में इतनी problem ना होती. What do you think? Is it true? Is it false? Anyone? FT? Anyone would want to answer? Okay, so I'll answer. This is false. We'll go on to the explanation. Don't worry. Okay. So our correct answer is both statement 1 and statement 2 are false. Okay.
both the statements are false, that you've got your answer. Okay, so D is your correct answer. Now look at this thing, look at the explanation, and with this you're also revising your concepts. So don't only feel that during these sessions we are just equipping you with the approach or with the style, like how you approach these kind of questions, but also simultaneously we do the revision of the important topics. So still, see, people have this issue, and I'll address this in this session, during this session, because I'm sure you would be watching the recording later on. So for everybody who's facing this issue in economics recently, that you've solved the sample papers given by CBSE, but since economics paper pattern has changed, and they are asking different kind of questions, and people are, students are getting confused, they're not very confident, they still feel that lack of confidence, that they're not able to feel confident. They're not feeling that maths mein कि ये topic से ये questions cover कर लिया, and you're sure that you'll be getting these many marks. You're sure you know the concept. Economics, you're still hanging. You're confused. Even after practicing the sample paper questions, you're not able, because one answer can be written in different styles. That is the beauty of economics. That is why we call it a dynamic subject. Why is it dynamic? Because content is same for everybody. What you are studying, somebody else who's watching the video is studying the same thing. Okay, so all of you are studying the same content, and yet there is something which is, not making you feel confident enough, for which practice is important. But also look at the session 1, which is answer writing tactics, answer writing tips and tricks. So in such kind of questions, or in different kind of questions, even with the same content, how you can present it in different manner, what you need to write in it. Because see, question kaise bhi aa jaye, you may not be very confident in some of the questions, but always know कि you know everything. बिकॉज कंटेंट जो है ना, उसी कंटेंट में से जितना तुम्हें मिला है और तुम्हारे फ्रेंड्स को मिला है और बाकी सबने पढ़ा है, उसी में से, उसके बाहर से कुछ भी नहीं है. And because of that, the content is same. Definitely, any question from here and there requires that content only. Just what remains is you need to understand the demand of the question. You need to understand what the question is demanding. You need to understand the keyword. You need to understand the command word. We talked about command word in the first session. So again and again and again, I'm referring to session 1. Okay. All your problems, all your queries will be solved by watching session 1, art of answer writing. And then you can implement the techniques in the upcoming sessions also, which would be taken by Navneet sir. So he would be teaching you all the content. You need to apply the tips there. Okay, so be very smart. If you're not feeling confident, practice. Practice is the only key. So as I always say, and as I always during the end of the sessions, I say practice is the price you pay for progress. And that's the thing. Okay, so this was just to address a major issue which I have been facing on Telegram also, and most of you are watching this video later on at your own pace, at your own speeds, different speeds. So when you're watching the video, please make sure that you feel confident, because you know everything. Any kind of question, you know everything. Don't worry. Okay, you trust yourself, you know everything. The content is same. Because all right, so let's just continue with the question. 1988 economic reforms in Pakistan. So we talked about economic reforms in Pakistan, and India started without any external pressure. That's not the case. And also टाइम भी सिमिलर नहीं था दोनों के स्टार्ट होने का. दोनों में ही अलग अलग ईयर्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे. इफ वी टॉक ऑफ चाइना, बिकॉज दिस चैप्टर इज इंडिया चाइना पाकिस्तान, तो वहां पर 1978 में स्टार्ट हुए थे. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, 1988 में स्टार्ट हुए थे पाकिस्तान में, 1991 में स्टार्ट हुए थे इंडिया. Okay, reasons for economic reforms in India and Pakistan. So now we get to the reasons. Reason क्या थे? Both India and Pakistan introduced economic reforms under the pressure of World Bank and IMF. Okay, that is in your book also. The content, again, as I say, you've read this. You've read everything. You know everything. Trust yourself. Okay, any kind of questions we can solve together. Don't worry. Okay, and economic crisis that emerged in two countries led to introduction of reforms. So introduction of reform did not start without any external pressure. There was pressure, there was economic crisis, and there was pressure of World Bank and IMF on India and Pakistan. Okay, all right. So that is how you know that statement 1 is incorrect. Okay, statement 1 is false.
if we talk of the optional language, the language of the options that you have. Okay, special economic zone. Special economic zone क्या होता है? A special economic zone or SEZ as we call it, a specifically marked territory or enclave within national border of country that has more liberal economic laws than rest of the world. Okay, and your NCRT says that SEZ implemented in various countries including People's Republic of China, India, Jordan, Poland, Kazakhstan, Philippines, and Russia. This is what NCRT says. When we read that chapter, NCRT says, does NCRT anywhere mention Pakistan? So that means Pakistan did not at that time implemented this thing, the entire thing, the special economic zone thing. So how will it reap the benefits when it did not implement? Got it? Got my point? Okay, so let's move to next question, which is about on-the-job training. So I would really want some of you who have joined me live, please try and answer this one. What do you think about this question? Everyone in my live journey, people who are watching the recordings, please pause. I mean, I'm already taking a pause, but please pause and try answering this question by yourself and then watch the explanation that I'm about to give. Okay. So yes, live audience. Anyone would want to answer this question? And also students, if you're facing any kind of issues, I mean, which are directly not related to the subject, but still hampering your progress or your preparation, you can always, we are happy to address it as well. So we can address any direct question also, but any indirect question with which you need help, you need my help, you need Navneet sir's help, you need anybody of ours help, please feel free and write it on Telegram, please. Okay. You can always drop in your audio message also, your video message also, your written message also. We'll take up everything. Okay. So we're there for you. So you can any day ask anything that you feel like. All right. So let's read this question. Statement 1. On-the-job training helped to bridge a gap between theoretical concepts and practical experiences. So on-the-job training, अगर आप लोगों को detail नहीं भी पता, सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता होगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप जॉब पर आए हो, वहां पे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको उस जॉब में क्या करना है. करेक्ट. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जॉब में तो कहीं काम आना नहीं. मोस्ट ऑफ द पीपल से कि जो हम पढ़ रहे हैं वो भी काम कहाँ आता है. सो कई बार होता है कि जॉब में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है स्पेसिफिकली, नो मैटर आप कितना पढ़कर आए हैं, यू मे होल्ड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिग्री एंड you've done so well in your life and you know everything, still maybe the requirements of that particular job where you land is different from what you've read. So then what happens is they opt for on the job training, that okay fine, you've joined this job and now you can probably get the training of what to do here and how to do and then implement. Okay, that means जो theoretically पढ़कर आए हो और practical experience है, उसका जो gap है वो bridge हो रहा है. Correct. So this statement seems true to me. This is how you think. Even if you've not read about on-the-job training in detail, you can still, by the literal meaning, make a connection. Correct. And then statement 2, on-the-job training update the employees with latest changes in their work field. So अगर आपके वर्क फील्ड में कोई लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं जो आपको नहीं पता चले थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आपको वो भी पता लग जाता. Okay, so that is how it helps. So I think this is also true to me. So let's see, both statement 1 and statement 2 are true. We've got a correct answer. Both the statements are true. ठीक है, on the job training देख लेते हैं. So see, this kid is thinking that what is on the job training, just like you. So let's just look at it. On the job training, it basically methods are those which are given to employees within everyday working of a concern. It is simple and cost-effective training method. The improficient as well as semi-proficient employees can be well trained by using such training methods. Training always helps. Okay, the employees are trained in actual working scenario. The motto of such training is learning by doing. You learn by doing. Correct. Instances of such on-job training methods are job rotation, coaching, temporary promotions, etc. So you can maybe give them on-the-job training and just bridge all the gaps. Okay, so that's it for this question. Let's move to next question. Anybody who would want to answer?
Okay, Daksh said that it should be option C. Yes, Daksh, it was option C. But now we have moved to next question. So please try and answer this question. Net investment is a stock concept. Capital is a flow concept. What do you think, everyone? So people who are watching me at their own pace, 2x करके, 1.25x करके, 1.5x करके, क्या लगता है तुम लोगों को कि what is the correct answer? Just pause this video and try and answer this question. Don't, speed fast किए इसका मतलब ये नहीं एकदम से मेरी explanation देखोगे, pause करो, रोको वीडियो और उसके बाद try करो देखने का कि तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर है. Correct? Don't forget to pause. People who are watching this recording, please आंसर खुद भी कर दो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. इसमें तो मुझे कुछ देखना भी नहीं. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कोई लंबी लंबी भी नहीं है कि हैव टू कीप रीडिंग द स्टेटमेंट्स. नो नो नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, so statement 1 says net investment is a stock concept, capital is a flow concept. So for that you should know the difference between stock and flow. Correct? क्या लगता है? नेट इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टमेंट टाइम एंड अगेन चल रही है, आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते जा रहे हो, क्या ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे? अकॉर्डिंग टू मी वी विल लुक एट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम. करेक्ट? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? दिस बिकम्स फ्लो कॉन्सेप्ट. सो हाउ इज इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स हो गई भाई, ठीक है. लेकिन हमारे ऑप्शन ऐसे है ही नहीं कि मुझे पता चला फॉल्स हो गया और मैं एलिमिनेट कर पाऊं. So I'll have to read statement 2 also. No other option. So then statement 2, capital is a flow concept. Capital, do we see the capital or look at the capital, measure the capital during a period of time? Yeah, at a particular point of time. Particular point in time or point of time. Okay, all right. So that means this becomes a stock concept, not a flow concept, which means your statement 2 is also false. Correct? So क्या हुआ? Statement 1, both statement 1 and statement 2 are false. I think option D is correct. Let's look at the answer. If option D, if I'm correct or not. Okay, so option D is the correct answer. And let's look at the explanation. If you don't know or by chance have, are unable to recall, so let's just revise it for you. सबसे ज़्यादा, and everyone, can you now look at your screens and reconnect what we read in first session? I again and again bring up first session. तो जो भी ये recording पहली बार देख रहे होंगे या live session करेंगे attend, उन्हें लगेगा क्या था ऐसा first session में कि मैं बार बार आपको first session बोल रही हूँ. So everybody, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि जब भी हम किसी चीज के बारे में कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंशिएट आ जाए, कमांड वर्ड इन एनी क्वेश्चन, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, इफ यू गेट कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशिएट, सो यू मेक अ टेबल लाइक दिस जहां पे पहला कॉलम बनाओ बेसिस ऑफ कंपैरिजन कि आप किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो और उसके बाद आप वो दोनों वेरिएबल्स का कंपैरिजन करो. ओके, so definition के basis पे देखूं तो stock is defined as a variable that is measured at a particular point in time, whereas flow is defined as variable which is measured over a period of time. पूरे टाइम के दौरान, एक साल में मेजर हो रहा है, एक महीने में मेजर हो रहा है. whereas इस वक्त, इस टाइम, आज की डेट पे कैपिटल कितना है, that is stock concept at a particular point in time. Okay everyone, time dimension, stock does not have, okay, my bad. Let's get back to our original slide where we were. So stock does not have a time dimension attached with it. Stock is a time dimension नहीं है कि एक साल में करना है, यानी during a period of 1 year, during period of 1 month, 1 quarter, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, अभी इस वक्त क्या है वो है stock, whereas flow has a time dimension attached with it. ठीक है? Example, capital, net investment. नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? फ्लो हुआ. और आपका स्टॉक हुआ कैपिटल. ओके, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज कैपिटल इज अ स्टॉक सिंस इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नो, okay, this is something error, so it is at a specific point in time. Yeah, see, I've spotted an error, and this is over a period of time.
Okay, just a slight change and what I've corrected. So specific period of time पे या specific period आप उस time पे देख रहे हो वो capital हुआ, during the period of time देख रहे हो that is net investment. All right, so इसका option हमें पता है and the correct answer is also what we know. Then we have this statement 1, statement 2 again. Next question. Statement 1 होता है export of financial services by India. Export of financial services by India will be recorded on credit side of current account. Financial services. So सबसे पहले तो current account में क्या आता है? Goods in मतलब goods का trade आता है, services का trade आता है, ये सब आता है. So services बोल रहा है current account में, ये तो मुझे ठीक लग रहा है. अब वो बोल रहा है एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. मैंने एक्सपोर्ट किए सर्विसेज तो उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा और जो भी पैसा मिलता है whatever we get the money comes in goes on credit side. What goes in, what comes in is credit side, what goes out is debit side. ठीक है, सो क्रेडिट साइड में आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है. तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू. पर क्या खाली ये स्टेटमेंट पढ़ के मेरा काम चलेगा? नो, स्टेटमेंट 2 भी पता होनी चाहिए. स्टेटमेंट 2 पता करने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू रीड स्टेटमेंट 2. वेरी सिंपल ना. लेकिन इसी में हम अब समझेंगे, जो भी कोई कैच है वो कैच लेंगे इस क्वेश्चन का. Foreign direct investments, यानी FDIs as we call it, in India will be recorded on credit side of capital account. So investment, anything, capital account में क्या जाता है? Anything that impacts either the assets or the liability of our country goes into capital account. Correct? So it will go into capital account. Correct. FDI capital account. बिल्कुल सही. ये तो मुझे आ गया. अब next point क्या देखना कि यार एफडीआई जो आ रहे हैं ये क्रेडिट में जाएंगे या डेबिट में जाएंगे? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में आए हैं. व्हाट कम्स इन गोज ऑन क्रेडिट साइड. तो आए हमारे पास क्रेडिट साइड जाएंगे. बिल्कुल सही. यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से भी लिंक है और क्रेडिट साइड भी जाएंगे. तो इसका क्या हुआ मतलब? इसका मतलब हुआ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, what answer do we have? C. Both statement 1 and statement 2 are true. Correct? देख ले आंसर क्या है. टिक मार्क कहां लग रहा है? ग्रीन टिक कहां लग रहा है? ओके, लेकिन हम बिना एक्सप्लेनेशन दिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे because we need to revise this concept again. because अगर हम में से किसी से भी कुछ माइनर एरर हुआ था इधर उधर, so let's just look at the or brush up our concept so that next time we don't attempt the same mistake. When we are attempting the question, we don't make the same mistake. Okay, that is why we are brushing up our concepts also simultaneously. So current account, the current account records exports and imports of goods, services and unilateral transfers. Unilateral transfers यानी बिना किसी सर्विस के आपको वन साइडेड पेमेंट मिल रही है, that is unilateral transfers. All right, capital account, it records all such transactions between normal residents of a country and rest of the world which cause change in asset and liability during accounting year. I've told you कुछ भी जो liability और asset को impact करता है वो कहा जाता है capital account में. All right, so component of current account क्या होते हैं ये भी चेक कर लो क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि क्या जा रहा है क्या आ रहा है. So import and export of goods, visible items, इसको हम balance of trade भी बोल देते हैं. Import and export of services, इसको हम invisible items and balance of invisible item भी बोलते हैं. Unilateral transfers. ठीक है. कंपोनेंट क्या आपका कैपिटल अकाउंट का. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने देखा कैपिटल अकाउंट में जाता है. ठीक है. एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लोन्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मैं आपको हमेशा ड्यूरिंग माय क्लास आई ऑलवेज से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक खजाना है हमारी गवर्नमेंट का. उस खजाने में गवर्नमेंट हर कहीं से आया हुआ एक्सचेंज रख देती है, फॉरेन एक्सचेंज रखती है और वो हमको खजाना लगता है. बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज आता है यानी हमारी कंट्री हमारी गवर्नमेंट का जो भी वो खजाना है ना जो असेट है इन अ वे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है और असेट और लायबिलिटी कहा जा रहा है कैपिटल अकाउंट में. बिकॉज ऑफ विच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई भी चेंज आ रहा है वो जाता है कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. So the component of current account do not cause a change in asset or liability status of residents of a country or its government. The component of capital account cause change in asset or liability of residents and government of country. Okay, are we clear with this? Are we clear with this question? Okay, let's move to next question.
which is what? Chalo, statements, let's read. And anybody, please feel free to answer in the chat box or in the chat section. Whosoever wants to answer, please feel free. Okay. So statement one says the consumption curve is an upward sloping straight line curve due to direct relationship between income and consumption and the assumption of constant marginal propensity to consume. ठीक है, वो बोल रहा है assumption है, upward sloping है, straight line है, direct relationship है, income का, consumption का. Do you think all this is true? Everyone, pause and think, because I know most of you will be looking at the recording. So please pause and think if the statement is true or false. Meanwhile, I'll read second statement out loud for you. Aggregate demand curve and consumption curve, AD curve and consumption curve are parallel to each other in, okay, so ये statement है कि यहाँ खत्म हो गई है, they are parallel to each other. I think this is true. If I know correctly, I'm a layman right now. I'm a student. I'm a confused student. ठीक है? I'm a confused student just like you. अब मैं थोड़ी सी confused हो गई हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है, जो मुझे याद आ रहा है पढ़ा हुआ, क्योंकि पढ़ा तो हमने सब होता है. Even a confused student has read everything. Just that इतना सारा कुछ होता है कि last moment कई बार होता है we are not able to recall, and I'm completely with you on that. Consumption curve जा रहा है यहाँ, क्योंकि investment आ रही है ऐसे, कंजम्पशन कर्व बन रही है बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट. इस वजह से एडी हमारा पैरेलल हो जाता है सी के, और जो एडी और इसका गैप होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है, बिकॉज सी प्लस आई इज इक्वल टू एडी इन टू सेक्टर मॉडल. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. करेक्ट. इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, विच मीन्स both the statements 1 and 2 are true. Why true? Let's see. कंजम्पशन कर्व जो है आपका डेफिनेटली इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, और कंजम्पशन कर्व का जो फॉर्मूला है या जो आप इक्वेशन देखेंगे दैट इज C इज इक्वल टू C बार विच इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY. दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दिस इज इनकम. इनकम के साथ कैसा रिलेशन है कंजम्पशन का? पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ विच इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है. सो अपवर्ड स्लोपिंग ही तो होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे कंजम्पशन है, यहाँ मतलब एक्स एक्सिस पे इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है. सो इफ इनकम इज राइजिंग, योर कंजम्पशन इज आल्सो राइजिंग, बिकॉज ऑफ व्हिच योर कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. ओके, relationship I've shown you the direct relationship in the graph also as well as in the mathematical equation also. Okay, I hope you got this. So change in consumption by change in income is your MPC slope. Are we clear with this? Then whatever told you यहाँ पर कि आपका जो AD है, AD is parallel to C. Yes, it is parallel to C because जो gap है इन दोनों का उसको हम I कहते हैं, because investment is constant and AD is equal to C plus I. You know AS is equal to C plus S, because of which we get I is equal to S when we talk of AD is equal to AS at equilibrium. This is your revision. Correct? Agreed? Okay, all right. So I am sure you understand what I was trying to convey. So that's why we move to next question. Okay, this question is a little tricky. That is why I really want you to have 1 minute. My live audience. Okay, all the people who are watching the recording, please pause and try think about this question. Like after every question, now why am I repeating? You're very smart people, smart students. All my students are very smart, I'm sure. So अपने हर question के बाद में छोटा-छोटा pause ले लो and question का answer खुद करो, फिर check करो मैं भी वही answer दे रही हूँ नहीं दे रही. आप लोग मुझे check कर लो. I mean you see if I am answering in your way. Correct? That would be fun. Try doing that. Statement 1, statement 2, anybody who's answering in the chat section, YouTube live chat. Statement 1, timing and sequencing are critically important. Critically important in post-economic reform agenda. Post-economic reform agenda में आपका टाइमिंग और सीक्वेंसिंग, जो इवेंट्स का आप टाइम कर रहे हो, यानी आप कुछ अच्छी चीज भी करोगे पर गलत टाइम पे करोगे, that will backfire on you. Would not create a major impact. But आप कुछ टाइमिंग अगर करेक्ट टाइमिंग पे करेक्ट सीरीज ऑफ इवेंट करोगे, that would be more beneficial. And sequencing also.
तो जब जिस चीज की जरूरत है उसको उस सीक्वेंस में करोगे, so that would be helpful. Correct? Are we all on the same page? So we agree with the statement, right? Everyone? So I feel this statement is true. Correct? My statement is true. Whereas post-pandemic reforms in India require a paradigm shift. Is it? What is a paradigm shift, or why post-reform India requires that kind of shift? So the correct answer, okay, by mistake, answer is on your screen. I would have asked you, but then this is on your screens now. So statement 1 is true. Statement 2 is false. Fine. If the answer is on our screen, doesn't bother me a lot, because I really need you to understand why statement 2 is false. Because statement 1 is true, that we've got. But why statement 2 is false? Okay? So we'll understand. Okay, we'll understand. First, we'll go here. Paradigm shift, an important change that happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and a different way. Paradigm shift. Okay, so it is the change that happens कि हम usual way में सोच रहे हैं कुछ, या हम सोच रहे हैं कि कुछ चीज ऐसे करेंगे, but एकदम से there is a new and a different way and it is replaced by it. Do we need that? I don't think we need that. What we need is कि इकोनॉमी और उसके हर सेक्टर का करेक्ट हाल समझते हुए हम पूरे डिस्कशन के साथ और हर सेक्टर, हर सेगमेंट, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, उन सबकी रिक्वायरमेंट्स क्या है स्पेसिफिकली, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करके, बिकॉज अगर कुछ एग्रीकल्चरल सेक्टर की रिक्वायरमेंट कोई है, सो दैट मे और मे नॉट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सेम गोज फॉर द सर्विस सेक्टर. So if service sector requires something, doesn't mean that manufacturing requires the same thing. Correct? So every sector's demand or requirements are different. Based on that, we should plan in such a way, discussing or observing every sector specifically, that what the sectors require when we are talking of the post-reform agenda. Correct? That is the reason we don't require paradigm shift all the way कि हमने कुछ सोचा और एकदम से एक new way उसको replace कर ले. No, we don't need that. Okay, we don't need that. So today's reform required discussion and consensus building. आज के reforms को क्या requirement है? Consensus चाहिए, discussions चाहिए, consensus building चाहिए. Okay, central government needs to work in tandem with state government and consult stakeholders impacted by reforms. So whosoever stakeholders are impacted majorly by the reforms, let's come together, the central government and the state government come together and discuss like whosoever's requirement is what, and then work. Not a suddenly new way should come and replace. Okay, not every traditional approach is bad. Already everyone understanding? Because this one statement that paradigm shift ho gaya, people somehow don't understand what is a paradigm shift, or they don't understand that what is the difference between consensus building and discussion and a paradigm shift altogether, and then you get confused and then you come up to teachers saying this statement might be too false, because it's not your fault, you're not able to understand the statement. So just you see, just a small statement, statement 2, post pandemic reforms require paradigm shift, just a statement, and it confuses us like anything, right? So don't get confused, do not get confused, and timing and sequencing are critically important in new reforms agenda. Okay, are we clear with this? A yes would be really helpful. A yes would be really helpful, mean a lot. So everyone, okay, so just like the girl on screen, thumbs up from my end for this particular question, and let's move to our next question. Okay, so we have our next question in front of us. Statement 1, statement 2, what do we think about this particular question? Okay, I'll read it out. 1991 was landmark moment in India's post-independence history, as that changed the nature of the economy in fundamental ways. I think I agree with the statement, and I feel this statement is true. Okay, why?
Because yes, of course, 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फंडामेंटल वेज में इकोनॉमिक की फंक्शनिंग, इकोनॉमी की वर्किंग आपकी चेंज हुई, करेक्ट. एंड दैट गॉट टू अस लाइक उसकी जो पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री थी ना हमारे इंडिया की, उसमें चेंजेस है 1991 की वजह से. So it was definitely a landmark moment. The statement is true. Okay, India's economic establishment launched a multi-pronged reforms agenda to repair India's macroeconomic balance sheet and ignite growth. Obviously, balance sheet खराब हो गई थी, BOP खराब हो गया था, वर्ल्ड बैंक और IMF बोल रहे थे कि चेंजेस लाओ. सो हमें मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच ही चाहिए थी ना. आपने सब कुछ साथ में किया. आपने ऐसे ही नहीं कि सिर्फ रूल्स ईज कर दिए, बट आपने ग्लोबलाइजेशन भी कर दिया, आपने प्राइवेटाइजेशन भी कर दी. ठीक है, सारी चीजें पब्लिक, आई मीन द गवर्नमेंट इज नॉट हैंडलिंग एवरीथिंग सोलली, सो देयर कम्स प्राइवेटाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस ईज हुए थे, लिबरलाइजेशन आ गई थी. मल्टी प्रॉन्ग एजेंडा अपनाए जा रहे थे. All right, so because of which this statement is also true. So we have both statements are true as our correct answer. All right, are we on the same page, everyone? Okay, so I think in the my live audience is not in the mood to answer today, and they're not very active for some reason. But I'm hoping that people who are watching this recording are pretty much active. I wish I could see you all and I could meet you all in person, but it's okay, it's fine. I'll be still happy if you learn new things, if you learn, you brush up your concepts and you come back on Telegram saying that the session was really helpful. It would mean the world to me, trust me. Okay. So India's post-1990 economic strategy entailed three important breaks with the past. Okay, so whatever the things, क्या different था, past से हटके क्या अलग चीजें हुई 1991 के economic reforms से, to dismantle the vast network of controls and permits that dominated economic system. Economic system को इंडिया में, okay, so since independence we tried a lot of things like green revolution, land reforms, and बहुत सारी कोशिशें की हमने, ऐसा नहीं किया, but still some things work, some things didn't work, because of which we had to come up with 1991 का reforms. तो उन reforms ने क्या changes लाया? तो basically जो ये huge control and permit system था ना, जिसने dominate कर रखा था economic system को, that changed. Okay, that changed. Then to redefine the role of state as a facilitator of economic transactions, as a neutral regulator rather than primary provider of goods and services. So पहले state या आपकी government जो है, here state means government. So government was primary provider of goods and services. Now it became facilitator also. That was a change. Okay. Then to move away from regime of import substitution to integrate fully with global trading system. Import substitution हम बोलते थे कि export promotion करो, import substitution करो. कि import है, basically क्या करो कि import जो भी आप कर रहे हो उसको बंद करके उसको domestically बनाओ. But it is not always sufficient. कोई चीजें import करना is better. आपने कोई raw material या कोई part अपने import कर लिया और उससे आपने पूरा phone, maybe phone if we are talking about, so a mobile phone, a smartphone, you are just importing a raw material of it or just a part of it, and then you're manufacturing the entire phone in your domestic area. That makes more sense rather than creating something which you can't create. Correct? Resources भी matter करते हैं. So all these things changed. Okay, that is why the statements are true. I hope you got the point now. I'm sure. Okay, any confusions? Telegram is always there. I'm always there. Okay, no issues. Then let's come to the next question. Let's read it. All right, statement 1, subsidies do not add any burden on financial health of a nation. हमारी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ पे सब्सिडी कोई भी बर्डन नहीं डालती. सब्सिडी देने से सरकार को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती नहीं है, उसकी फाइनेंशियल सेहत जो है हमारी सरकार की वो कुछ नहीं खराब होती. ऐसा है? Do you think ऐसा है? Is this true? I don't think this is true. For me, this is false. No, it does create impact on financial health of farmers. But it's not that it doesn't create any burden. It does. It creates, it gives its benefits also, but burden bhi hota hi hai. You can't say there's no burden on financial health. There is. Okay. Then statement 2,
complete removal of subsidies may violate the aim of equitable distribution of income. आप equitable distribution करना चाहते हो, गवर्नमेंट का aim है, one of the aims, one of the objectives is equitable distribution of income. So you want कि income हर किसी के पास बराबर तो पहुंचे, ज्यादा skew ना हो कि मे बी 90% इनकम है कंट्री की सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास एंड बाकी की 10% इनकम है कंट्री की मेजर 90% पॉपुलेशन के पास. दैट शुड नॉट बी द केस. गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, जो लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें सब्सिडी दे देती है कि थोड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए. ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल ही सब्सिडी बंद कर दोगे, कंप्लीट रिमूवल कर दोगे, तो शायद कुछ जगह पे आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ना अचीव कर पाओ. सो दिस इज ट्रू. Okay, this is true. Statement 1 is false, statement 2 is true. So we have D option, which is saying statement 2 is true and statement 1 is false. D is your correct answer, everybody. Okay, let's see. Yes, the green tick is also on D. My red tick is also on D. That means D is our correct answer. Okay, so that is the case. Then what do we have? Okay, everybody. So now we are coming at subsidies. So we are understanding the subsidy portion, everyone. Subsidy is, while subsidies encourage farmers to use new technology, they are huge burden on government finance. They encourage the farmers. So as I'm saying, subsidies में बुराई नहीं है, subsidies problem नहीं है. लेकिन अब आप वो दे रहे हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, बट आपके पॉकेट से तो जा रहा है ना, आपके बैलेंस शीट, आपके जो एक्सपेंसेस है उसमें तो ऐड हो रहा है ना. इफ वी टॉक, इफ आई एम द गवर्नमेंट, सो इट इज एडिंग ऑन टू माय एक्सपेंसेस, इट इज अ बर्डन ऑन माय फाइनेंशियल हेल्थ. ओके, नो मैटर हाउ बेनिफिशियल इट इज, बट फाइनेंशियल हेल्थ इफ वी टॉक अबाउट, इट इज अ बर्डन. ओके, देन वी हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, progressive tax system. Those who earn more income pay a larger amount of tax. Okay, those who earn more income pay a larger amount of tax. Educational grants, subsidies, low interest loan, welfare income, so all these things happen for equitable distribution. All right, you may read. And subsidy क्या होता है वो आपको दिया ही है. And subsidies financial burden या financial health पे भी in a way burden हो जाता है. Okay, so that is the thing. उसके बाद we'll move to next question. So two statements वाले question we are done with. अब 4 statements वाले question है, and I would really want my live audience to just read this question for a minute and try answering this, please. Yes, everyone. Anyone who would want to answer this question? Okay, so we'll read the statements. In questions में elimination technique is possible. Okay, so money supply in India may increase if money supply increase. Money supply increase मतलब लोगों के हाथ में पैसा जाना. Money, लोगों के हाथ में पैसा गया. People have money in hand. कब वो होगा? Money supply increase कब होगी? Reserve. So now it may happen. You may know something or something other. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, if I start reading from 4th statement, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज बैंक रेट. आई नो बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म रेट होता है. अगर रिजर्व बैंक वो इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब कमर्शियल बैंक उनसे लोन नहीं ले पाएगा और कमर्शियल बैंक से लोग उतना लोन नहीं ले पाएंगे. इट विल रिड्यूस द मनी सप्लाई. आई एम श्योर ऑफ इट. सो दैट मीन्स 4th इज इनकरेक्ट. 4th इनकरेक्ट है, इसका मतलब 4 कहाँ का आ रहा है? ऑप्शन बी में भी 4 है, ऑप्शन सी में भी 4 है, ऑप्शन डी में भी 4 है. लुक, I only knew, everybody, can you see? I only knew that statement 4 is incorrect, and based on that I eliminated 3 options, and now I've arrived at option A. Got my point? How you come? But let's read the other statements as well. So Reserve Bank of India injects more money in circulation. Okay, more money in circulation. Central bank ने Reserve Bank ने डाल दिया, तो obviously money supply increase होगा. The commercial bank expand their credit operation. Credit operation expand करेंगे तो भी आपका money supply increase होगा. Tax rate are reduced by central government. Tax rate अगर reduce कर देगी central government तो भी money supply increase होगा. Okay, so statement 1, 2 and 3 are correct.
I will really want now to read the next question, everybody, and try answering this, please. Yes, everyone. Okay, so if you've taken a pause and if you've thought about it, just read the question and see ki dash and dash are the reason for slowdown of Pakistan's economy since independence. So slow down, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है. स्लो डाउन का रीजन है, स्लो डाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट स्लो डाउन पाकिस्तान की इकोनॉमी का. अब एक बात बताओ, मैं अगर ये पढ़ूं स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर इतनी ही स्टेबल परफॉर्मेंस होती एग्रीकल्चर की तो स्लो डाउन क्यों आता? लॉजिकल थिंकिंग. आई डोंट नो द आंसर. I don't know the answer. I've read everything in economics. So students, I'm completely with you. My Telegram group, my Telegram family, and the new students who are there, I'm completely with you. Ki you read so many questions, you solve so many questions, still you're not feeling confident. Correct. I'm also not feeling confident. So I don't know anything, but still I know the basics. I know the logic. तो अगर मुझे नहीं भी आता तो भी imagine हम slow down की बात कर रहे हैं. We are talking about slow down. अगर स्टेबल परफॉर्मेंस चल रही है एग्रीकल्चर की तो स्लो डाउन क्यों आएगा? कोई पॉइंट नहीं दिख रहा ना, तो 3 एलिमिनेट कर दो. ऑप्शन बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड. 1 इसका मतलब 1 स्टेबल 1 रीजन है क्योंकि डी और ए बचा, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. बिल्कुल पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से स्लो डाउन आ रहा है. दिस इज करेक्ट. Now growth of service sector. 4 growth of service sector. My God, growth of service sector. सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा होता है. 3 ही तो सेक्टर है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस. एग्रीकल्चर स्टेबल है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो स्लो डाउन आने का पॉइंट क्या है? सो ये तो मुझे नहीं भी आता ना क्वेश्चन, तो किसी को आप नॉर्मली पढ़वा दोगे ये क्वेश्चन, यू नो, नॉर्मली पीपल रीड दिस क्वेश्चन एंड दे वुड बी एबल टू सॉल्व इट. बिकॉज लॉजिक रीजन क्या दे रहा है? स्लो डाउन बोल रहा है. मैं अगर इकोनॉमी ना भी देखूं ना पाकिस्तान की, हम किसी भी इकोनॉमी के 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं व्हिच आर परफॉर्मिंग गुड एंड स्टिल देयर इज अ स्लो डाउन. Correct. So over dependence on remittances from abroad, yes, this is the reason for slowdown. क्योंकि आप over dependence हो जाती है, remittances आएंगे, तो अगर वो नहीं आते slow down होता है, तो ये reason हो सकता है. So 1 and 2 is the correct answer. Okay, 1 and 2 is the correct answer. Next question. Next question क्या बोल रहा है? Under the balance of payment structure of a nation, the 2 main categories of accounts for the classification of transaction. Oh my God, such simple question it is that even if I don't have the statements in front of me, even if I don't have the answer, अगर ये ऐसे ही dash and dash होता ना, fill in the blank with no options, no statements, even then all of us who are watching this video, we would have answered this question. I trust you so much. Okay, so but still, you know, अब हमें statement दी है, option दी है, तो चलो अब उसका use तो करना ही पड़ेगा. So okay, let's use it. But recording people, please pause, answer. This is very simple. But still, let's look at the statement. Current account, yes, of course. Capital account, yes, of course. 2 ही तो account होते हैं, capital, current. उसमें भी sides होती हैं, debit, credit, debit, credit. Okay, unilateral transfer. Account, loan account, ऐसा कोई account नहीं है. Everyone. So please let's eliminate, and we have option 1 and option 3. 1 and 3 कहाँ दिख रहा है मुझे? B में. My correct answer is B. All right, my correct answer is, correct option is B. Explanation. We have a different explanation for it, or not a different, actually this is just an account. This is in you know, the handwriting is it's handwritten because you know debit credit nahi hota kahin jagah. So credit, what comes in? My accounts teacher always used to say what comes in credit, what goes out debit. Okay, so merchandise, visible, export of goods. Export goods का हुआ है तो करंट अकाउंट में आएगा. गुड सर्विसेज यूनिलेटरल करंट अकाउंट में आती है. जो एक्सपोर्ट हुआ है यानी पैसे आए हैं, इंपोर्ट हुआ है पैसे गए हैं डेबिट साइड. नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आ जाता है नेट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट. Okay, same way you can, everybody, my live audience, take a minute and just try and look at the answer.
solve the, just you can look at the table and understand for yourself. इनविजिबल में सर्विसेज होता है, इनकम रिसीट होता है, ट्रांसफर रिसीट होता है, और एक्सपोर्ट्स जो होते हैं उनसे आता है पैसा, इंपोर्ट होते हैं उनसे जाता है पैसा, एंड नेट एक्सपोर्ट आ जाता है ओवरऑल क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट असेट और लायबिलिटी पे फर्क आता है। सो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से आ रही है वो क्रेडिट साइड जाएगी, इन्वेस्टमेंट जा रही है अब्रॉड में तो डेबिट साइड जाएगी। सेम बोरोइंग अगर हमने की है, पैसा लिया है तो क्रेडिट साइड जाएगा, पैसा दिया है, लेंडिंग लोन दिया है, सो दैट विल गो टू डेबिट साइड। ओके, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिक्रीज मेरा खजाना कम हो गया, मेरी एसेट कम हो गई, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड देन यू हैव नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, देन आपका 3-4 कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, नेट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, नेट इनफ्लो, नेट आउटफ्लो, टोटल इनफ्लो, टोटल आउट। सो दिस इज हाउ योर बीओपी अकाउंट रिमेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन ने हमें। प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल अ मेजर सोर्स। पहले तो मुझे ये देखना है हमेशा क्वेश्चन में इन तरह के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इज इट आस्किंग मी इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट? सबसे पहले हमें यही देखना है। वंस वी नो करेक्ट है इनकरेक्ट है, primary sector is still major source of employment in India. Okay, all public sector establishment and those private sector establishment are called formal sector. Majority of Indian workforce is employed in informal sector. Growth of employment has decelerated. Majority of Indian, okay, ये statement पकड़ते हैं डी, हमें पता है डेफिनेटली इनकरेक्ट है तो डी एलिमिनेट करते हैं, पर डी एलिमिनेशन से सिर्फ ये एलिमिनेट हो रहा है। So we need to know the other statements. ठीक है, so the correct statements are A and C. Okay, you read the statement, you will find it for yourself. कि why statement A and C are the correct options. So A and C are correct. I'm not including the explanations of these one because यहाँ statement से figure out कर लोगे बहुत कुछ. So you don't need a separate explanation for it. Identify fiscal measures from the following that will help correct excess demand. Fiscal measures, everybody. Fiscal measure यानी जो गवर्नमेंट अपनाती है। सबसे पहले तो ए देखो, डिक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट भाई मॉनेटरी मेजर है, आरबीआई अपनाती है, ना के फिस्कल मेजर। गवर्नमेंट नहीं यूज करती, जो भी गवर्नमेंट अपना रही है दैट इज फिस्कल, whereas जो आरबीआई यूज कर रही है दैट इज मॉनेटरी मेजर। रेपो रेट इज मॉनेटरी। All right, so A है हमारा वो wrong है, तो A अगर wrong है, if I start eliminating A, I have already got to option B and option C. Okay, and when I've got to option B and C, I know that I need to look at the other things also. Now increase in repo rate. Again D, increase in repo rate. Friends, increase in repo. Repo तो monetary measure हो गया ना, increase हो decrease हो, राइट। सो डी भी एलिमिनेट हो गया, तो बस क्या बचता है? बी एंड सी। बी एंड सी क्या है? बी एंड सी है आपका डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस। ओके, ऑलराइट, आर वी ऑन द सेम पेज एवरीबॉडी? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑल द पीपल आई एम कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग यू, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो प्लीज टेलीग्राम पे आके ज्वाइन करो, और अगर जो ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग ये वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज लेट मी नो, इज आर दीज सेशंस इवन हेल्पफुल फॉर यू? हाउ दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू? इट वुड जस्ट टेक अ मिनट, you know, from your end, but it will be really, you know, helpful for us also to plan our future sessions, and it would mean a lot to us. Anything, okay, you feel like, any feedback you feel like giving to us, go ahead, feel free on the Telegram group. All right, then we have another question where we have 5 statements. So friends, are you seeing these kind of questions will also help you in CUET? Okay, CUET में भी help होगी. So creation of money. अभी हमें क्वेश्चन क्या है? Which of the following represent objective of government budget? गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है मनी क्रिएट करना। मनी क्रिएट करना मुझे तो नहीं लगता गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है, तो अगर मैं ए हटा दूं तो मेरे कौन से ऑप्शन गए? सिर्फ एक ही गया। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस, दिस इज
a government objective. Economic stability, yes, this is a open market. चलो ई पे आते हैं, open market operation. This is RBI, government objective नहीं है, ये RBI करती है ये. तो E incorrect हो गया, E eliminate कर दो. E eliminate करते ही I have arrived at the correct answer, which is B, C, and D. Reallocate resources, economic stability, and reducing inequalities in income and wealth. Okay, everyone. Are we on the same page? Do we know why B, C, and D are correct? Because logically, content-wise also, we know that B, C, and D are correct. But by eliminating smart strategy, से भी हमें पता है कि B, C, and D are correct. Let's move to next question. Which of the following is an example of self-employed worker? Self-employed जो खुद ही काम कर रहा है, जो खुद ही अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर रहा है. Self-employed, कंस्ट्रक्शन लेबर. कंस्ट्रक्शन लेबर है, किसी के अंडर तो काम कर रही होगी. सो कंस्ट्रक्शन लेबर मुझे नहीं लगता सेल्फ एम्प्लॉयड है, और मैंने ए एलिमिनेट किया तो सिर्फ ऑप्शन ए ही एलिमिनेट हुआ. चलो अगला पढ़ते हैं. अ डॉक्टर वर्किंग इन हिज प्राइवेट क्लिनिक. अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला, मैं डॉक्टर हूं, मैंने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला, सो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. ठीक है, सो बी इट सीम्स करेक्ट टू मी. ओके, ये देखते हैं, डी देखते हैं, डी ऑप्शन से क्या एलिमिनेट होता है. अ हैंडलूम वीवर एम्प्लॉयड बाय खादी ग्राम उद्योग. खादी ग्राम उद्योग ने हैंडलूम वीवर को रखा है, तो खादी ग्राम उद्योग उनको उनकी सैलरी देता होगा, तो वो खादी ग्राम उद्योग के एम्प्लॉय हुए. करेक्ट, वो सेल्फ एम्प्लॉयड तो नहीं हुए, अपने ही एम्प्लॉय तो नहीं हुए खुद, वो खादी ग्राम उद्योग के एम्प्लॉय हुए. इसका मतलब है डी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर में नहीं आता, बिकॉज ऑफ विच आई विल ऑल्सो एलिमिनेट B and D. So I remain with B, C, and E. Yani C is correct. Yani doctor working in his own private clinic, cement shop owner, and vegetable vendor are self-employed workers. Okay. So again and again in these kind of questions, do you understand? So I am not here to teach you all the content in one go. Trust me, you've read it multiple times. And I know for the fact, and you should also trust yourself that you know everything. We are not here for that. But हम यहाँ पे वो issue address करने के लिए जो कि actually problematic है economics में, which is that you have hold of content, you know everything, you've read multiple times, you've even solved the sample papers, you're solving so many questions, still you're not feeling confident enough while solving the questions. Why? Because एक तो इतने सारे तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं आप सीबीएसई पेपर में, एंड हर तरह के क्वेश्चन का अप्रोच अलग है, स्टाइल अलग है. सो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाती हूँ कि आपका कंटेंट का नॉलेज अच्छा है तो आप आंसर कर सकते हो, बट अगर आपको किसी एक स्टेटमेंट में कंफ्यूजन भी है तो भी आप सही आंसर कर सकते हो बाय यूजिंग द स्मार्ट वर्क. एंड ऑलवेज रिमेंबर एलिमिनेशन टेक्निक, व्हिच आई आल्सो कॉल एज स्मार्ट स्ट्रैटेजी, is always applicable when you are have hold of content. कोई पढ़ के ही नहीं गया चैप्टर, तुम सोचो कि हम कुछ ना पढ़ के जाए और स्मार्ट वर्क खेलेंगे और एलिमिनेशन खेल के we'll get the marks. I'm sorry, you won't do that. It will not be helpful. You can do that, कर दो एलिमिनेट, गलत एलिमिनेशन कर दोगे. So स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी तभी वर्क करती है जब कंटेंट पे होल्ड है, you have the hold on content. So just the thing, यहाँ पर लॉजिकल तो हमने रीजन देखा ही कि क्यों वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, बट ऑल्सो वी यूज द स्मार्ट टेक्निक विच इज एलिमिनेशन टेक्निक. ओके एवरीवन, आर वी क्लियर? ग्रेट. Let's move to, so C is the correct answer as we discussed. Let's move to next question. Next question क्या कह रहा है? Which out of the following are intermediate goods? Intermediate goods, final goods पढ़े. Intermediate goods जो और goods बनाने में help करते हैं, जो उनको बनाने में use होते हैं, those are intermediate goods. So milk purchased by household. मैं milk purchase करने गई, I'm a household, मैं लाई शॉप से खरीदा और मैं उसको कुछ भी बना के मैंने उसको कंज्यूम कर लिया. ठीक है. So is it helping in creating something else? No. So it is not an intermediate good. A is not an intermediate good. When A is not an intermediate good, मेरे option C और D eliminate हो गए. With which I know कि B and D are definitely intermediate goods. B and D, sugar purchased by a restaurant. Let's look. रेस्टोरेंट ने शुगर परचेज की, बट उस शुगर से रेस्टोरेंट ने कुछ और भी बनाया, फाइनल डिश, जो उन्होंने फाइनल डिश बना के बेची. ऑब्वियसली शुगर ने हेल्प की उन्हें दूसरी डिश बनाने में. सो शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड. फर्नीचर परचेज बाय स्कूल इज एन इन्वेस्टमेंट, इज यूज्ड फाइनली, सो इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड. यहाँ पर डी,
chalk and duster purchased by a school is definitely an intermediate good. And also printer purchased by a lawyer. Do you think printer purchased by a lawyer is an intermediate good? Printer purchased by a lawyer is a final good for him. Durable good. Correct? So E is not an intermediate good. So correct option क्या बचता है? B. ठीक है? B is the correct answer, everybody. Let's move to next question. So today the session is proceeding a little faster because most of people or most of my students are not that active on the live chat, so we are not getting to interact, which is why we are just constantly, taking up the session. So don't mind the shorter duration if it goes shorter at all. I'm sure we will complete the session by on time or maybe slightly before. Okay, so A is what we have as money is what money does. Professor Walker said correctly that money is what money does. That means it includes the function of money as medium of exchange or the other functions. ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? अब क्वेश्चन देख लो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऐसे में ना कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है ना उन पे टिक करते रहा करो करेक्ट, और फिर जिन पे क्रॉस लगाया ना वो वाले इनकरेक्ट हो गए. ठीक है, so there are many assets which carry functions of money. है, assets तो है, तो yes is also correct. In modern sense, money creates instability. Do you think money creates instability? No, this is an incorrect statement, friends. Okay, the first and the foremost role of money is that it acts as medium of exchange. Absolutely true. And then what do we have? Money acts only as convenient unit of account. So friends, ये ना only as जो होता है ना, only, these are called extreme words. इनको हम extreme words कहते हैं. So not only elimination strategy, today I'll also teach you this extreme words का strategy. कि आपको क्या करते हैं लोग, ये लोग बोल देते हैं कि extreme words use कर लेते हैं कि money is used, money acts only as, कि सिर्फ यही रोल है उसका, unit of account, convenient unit of account, बाकी कोई रोल ही नहीं है. What do you think? No, right? Only as. तो इतने extreme word use कर दिया है. So इतने extreme word वाली statement mostly smart strategy mostly incorrect हो. ठीक है? So this is incorrect. हमें incorrect statement ढूंढनी थी. C and E are the incorrect statements. B is correct. और अगर correct statement होता यहाँ पे लिखा होता, what if यहाँ पे लिखा होता identify the correct statements, तो मैं क्या करती? A, B and D मेरी correct statements होती. But right now we are focusing on incorrect. Incorrect कौन सी है जहाँ cross लगा हुआ है? C and E. Okay, all right. Are we on the same page, everyone? Good. Okay, great. Let's move to next question. All right. So यहाँ पे भी you have 5 statements. Almost 60% of the population lived in villages on the eve of independence. जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जा रहे थे ना, या जब जा चुके थे, हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी, उस टाइम पे विलेजेस में कितनी % पॉपुलेशन रहती थी? एनसीईआरटी पढ़ा है ना, तो ये आंसर जरूर आना चाहिए. एंड ये डेटा दिया ही तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, और सारे हो भी जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% नहीं थी, 85% पॉपुलेशन विलेज में रह रही थी. सो ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और ए ऑप्शन एलिमिनेशन से मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है. लेट्स लुक एट द अदर स्टेटमेंट्स. सो इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश रूल. प्री ब्रिटिश इंडिया में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट थी फूड ग्रेन्स में. यस, दिस इज करेक्ट. वी वर सेल्फ सफिशिएंट. फूड क्राइसिस उनके आने के बाद आया था, और वापस से उनके जाने के बाद हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करके वापस से फूड सफिशिएंट बन गए थे. ठीक है. ब्रिटिशर्स एनकरेज कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया. इज इट ट्रू? मे बी आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स लीव इट फॉर द टाइम बीइंग. लेकिन मेरा करेक्ट आंसर ऑलरेडी आ चुका है. पूछो कैसे? मुझे करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी. मुझे पता है फॉर श्योर बी करेक्ट है, तो सी में भी बी नहीं आ रहा और डी में भी बी नहीं आ रहा. दैट मीन्स माय करेक्ट आंसर इज ए, which is A, B and E. Tisco was established. So friends, if you don't even know the year of Tisco, if you don't remember कि Tisco कब आया था, लेकिन आपको पक्का पता है कि B सही है,
आपको पता है ए गलत है, बी सही है, तो जैसे ही आपको पता चला बी सही है, आपने बाकी दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए एंड यू अराइव्ड एट योर करेक्ट आंसर. Understanding what I'm trying to convey? Okay, all right. But also read the other statement. So Britishers did not encourage the capital good industry and India was major exporter of finished goods. So let me also tell you one thing. India was major exporter भी अगर तुम कर लेते ना कि तुम्हें पता है एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड तो कहीं से भी नहीं था इंडिया, रादर इम्पोर्टर था, ये गलत है, तो भी आप लोग ये एलिमिनेट कर देते. एंड यू न्यू कि ए गलत है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, अपने आप ऑप्शन ए बचा फिर भी. ठीक है, देख लो कितने तरीके से सही आंसर पे आ सकते हैं. Are you guys with me? Recording people, like whoever is watching this recording, are you guys happy with the session? And I really hope that you are. But please, again and again I'm saying, come back on Telegram. Either join the Telegram or give me the feedback. दोनों में Telegram तो join करना ही पड़ेगा. ठीक है? Okay, let's move to the next question. Subsidies are economic benefits granted by government. We have to find incorrect statement, friends. Command word correct statement मत mark कराना, incorrect statement mark करके आनी है. Incorrect. So this seems correct to me. Subsidies help in increasing production. ठीक है, subsidies are burden on government budget. Subsidies are capital expenditure. No, they are not capital expenditure. D is incorrect. And if D is incorrect, I know. तो मुझे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. डी सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, यानी मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है. सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सिर्फ एक पता होते ही. मुझे बाकी सब में अगर कंफ्यूजन भी है तो मुझे पता चल गया कि सी एंड डी सब्सिडीज आर बर्डन ऑन गवर्नमेंट, ये भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है, विच मीन्स दैट इज माय. सो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देख रहे हो. सब्सिडीज आर बर्डन ऑन गवर्नमेंट बजट. सब्सिडीज और उधर था कि सब्सिडीज आर basically huge burden on government's financial health. Okay, this was the difference between the two statements. Then we have another question. Which of the following factors are contributing to global warming? Global warming में क्या contribute कर रहा है? Burning of coal. Yes, it is. Deforestation. Forest ही हटते जा रहे हैं, forest cover हट रहा है. Yes. Methane gas released in animal waste. Yes. Use of fossil fuel. Yes. Hydropower. अगर hydropower use हो रही होती, हाँ, वो global warming में contribute ना करती. So E is incorrect. E is incorrect. So मेरा correct option E किसी option में है ही नहीं. देख लो. So all the options A, B, C, D are correct. Okay, so with this, we've finished the questions. The ASPE portal we'll talk about. As I told you, we might finish today a little early. That is what is happening with us. So aspiration portal, login, password, बोर्ड हेल्पलाइन ये रहा तुम लोगों के लिए. जो मेन फीचर है सारे एक्सप्लोर करो, बट बोर्ड हेल्पलाइन जैसे ही खोलोगे तो तुम अगले पेज पर आओगे जहाँ पे तुम लोगों को ई क्लासेस दिखेगा. All right, we're not getting back any sooner. I need to explain this to you. So बोर्ड हेल्पलाइन में ई क्लासेस दिखेगा. ई क्लासेस में जाकर यू गो एट दिस पर्टिकुलर शेड्यूल एंड जिनको भी रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है प्लीज गो एट द रिकॉर्डिंग्स. लाइव सेशन के यूट्यूब लिंक यहाँ बने हुए हैं, बट इफ यू नॉट एबल टू अटेंड द लाइव प्लीज गो एंड लुक एट द रिकॉर्डिंग. सेशन के अराउंड आगे रिकॉर्डिंग लिखा होगा यहाँ पे एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्सेस द रिकॉर्डिंग्स एवरीबॉडी. Okay, so this is the thing, and with this I will just wrap up this session by addressing some quick few things which are very urgent for all of us. All right, so we've covered 6 sessions in total. We are still to go with 4 more sessions. So first of all, I am sure that you would have seen Navneet sir's session. He took one session, but then if you haven't, I am, again introducing him because he is going to take next 4 sessions with all of you. Don't think I'm disappearing on you. No, I'm not. I'll meet you on the Telegram group. Definitely, we are there. Anything you need to know, anything you need to ask, you can ask me. I am there active full time. Don't worry. That's how I say that I'm not disappearing on you. Navneet sir will take live sessions one-on-one, but I'm always there. Okay, so just be happy. Do the 3 marker questions.
whatever we'll be doing the 3-marker questions, 4-marker questions, 6-marker questions, and the important numericals from all the important chapters, everybody. So just come all prepared. And if you haven't, again, I am saying this for the last time at this hour, that please watch the art of answer writing, because now in the next 2 sessions, that is going to be on Friday and coming Monday, the sessions on art of answer writing would be very helpful, will come very handy, because sir आपको 3 mark 4 mark 6 mark के क्वेश्चन दिखाएंगे, वो आपको कंटेंट दिखाएंगे, बट उस कंटेंट वो कंटेंट आप सबके लिए सेम है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन एंड अपना डिफरेंस कैसे लाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? I hope you're understanding what I'm trying to say. The way of presenting also holds importance, which will give you or which will fetch extra marks for you. Okay, all right, so that is what we are going to do. Any doubts, any queries, Telegram group active, 2 PM quiz attempt karo, 9 PM uske answers dekho, jo bhi doubts aa rahe please पूछते रहो. ठीक है? I really hope you enjoyed the sessions with me, and it was a great time meeting some of you on the live, and meeting, not able to meet, but at least I'm hopeful that you guys would have watched the recordings. So if you loved it, please give the feedback, and all the best everyone.